Being a part of KLF, I welcome all of you to this media conference for Kashmir Literature Festival 2025, which will be held in the SKICC on the 11th and 12th October. I'm glad to be a part of a cause that not only promotes literature, art and culture, but also brings together like-minded people, artists, poets and creative minds. सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है. तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है. अल्लामा इकबाल का ये शेर हमेशा से फन और अदब के उस जज्बे से जोड़ा गया है जो इंसान को बुलंद सोच और महसूस करने का हुनर देता है. We at KLF celebrate this very spirit of evoking the fire of human emotion, which is the motive of every art form. Today you will hear directly from the foundation representatives and our invited literary voices who will share more about the vision, the highlights and the program. Since Kashmir Literature Festival is a flagship initiative of SKICC Foundation, we are glad to have Ms. Naira with us as a representative. So without further delay, let me invite our first speaker to address us. Ms. Naira. Thank you so much, Tabir. Ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. My name is Naira Manzoor and I am a representative from SKICC Foundation. As I am here before you today, it gives me immense privilege to not only be the member of SKICC Foundation, but also as someone who is deeply associated with reviving the intellectual and cultural legacy of Kashmir. About SKICC Foundation, SKICC is a non-profit organization which aims to create strength, to preserve and promote knowledge, and to spread it widely. And Kashmir Literature Festival is one of our proud initiatives to do so. Now, what does SKICC mean? I will not get into the textbook meaning of it. I will not delve into the nitty-gritties of it, because that information you will find in abundance in social media on Google. As they say, वक्त कलील और कहानी तवील है, कहना बहुत कुछ है, लेकिन रहने दीजिए. So I would rather choose to speak on the spirit of SKICC Foundation. I'm sure most of you, in fact, all of you must have heard from your grandparents, from your parents, about the rich culture and heritage of Kashmir. You must be knowing that Kashmir, back in the days, it was known as Boston of the East. There was a time when eminent scholars, researchers, and travelers would come to Kashmir to seek enlightenment, to seek knowledge. And when I talk about it today, Abul Fazl comes to my mind. Ibn Battuta, Al-Baruni, Kumarajiva, and the list is so long. Kalhan, we can spend the entire day talking about it, and this list is still not going to end. And unfortunately, because of the narratives that were spread about Kashmir, Kashmir has attached to itself a lot of synonyms: conflict, insurgency, war zone, issues, so on and so forth, which continue to overshadow the legacy of Kashmir. So SKICC Foundation, with the initiative of Kashmir Literature Festival, aims to revive the cultural legacy and intellectual legacy of Kashmir. We aim to bring back the glory of the past and to provide a platform of world-class literature, art, and culture. And when I talk about it today, I cannot forget when Sayyid Ali Hamdani said that when you sow knowledge, you reap peace. So ladies and gentlemen, our past was glorious, our present is resilient, and our future should be, must be luminous. And that can only happen when all of us dare to share our story. And that's what we're doing at SKICC Foundation through Kashmir Literature Festival. And I openly and humbly extend you an invitation to be a part of it and to promote the noble cause. Thank you so much. Thank you, Naira. That was a beautiful introduction to what lies ahead. Moving forward, events like these cannot be possible without great support and teamwork.
And I'm glad to have our partners today with us who made this happen with their incredible support. And without this collaborative effort, this wouldn't be possible. अकेले ही चला था जनाबे मंजिल मगर लोग जुड़ते रहे और कारवां बढ़ता गया. I am very happy to introduce representatives from JK Bank, Rising Kashmir, Jammu and Kashmir Academy of Arts, Culture and Languages, and of course Shashi sir from NIFT. I invite him to speak a few words about his association with KLF. थैंक यू नायरा। मैं यहाँ निफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम शशि रंजन है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निफ्ट में हूँ और केएलएफ की टीम हमसे मिली थी और इनसे डिस्कशन करके काफ़ी अच्छा लगा। आर्ट, कल्चर और लिटरेरी में ये कश्मीर को और आगे ले जाना चाहते हैं। तो इसमें हमारे डायरेक्टर मैम से और हमसे डिस्कशन हुआ तो हमें लगा ये काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है और हमारे निफ्ट में पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं जहाँ पे हम पूरे ऑल ओवर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और हम चाहते हैं कि कश्मीर के कल्चर से, आर्ट से, लिटरेचर से हमारे बच्चे अवेयर हो जाने और इस कल्चर को अपनाएं, क्योंकि कश्मीर तो ऐसे में काफ़ी खूबसूरत है और फेमस है। तो हम चाहते हैं कि इस भावना से और हमारे बच्चे यहाँ ब्रांडिंग में, प्रमोशन में, वीडियोग्राफी में और कल्चर परफॉर्मेंस में भी काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो हम होप करते हैं कि जो इवेंट है हमारा 11th और 12th को तो काफ़ी अच्छा होगा और कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल अपने सेकेंड एडिशन में इसको और एक नई मुकाम तक ले जाए। थैंक यू। Thank you, Shashi sir, for that presentation. And now it's time to hear from those who truly bring this festival alive. Please welcome Ms. Aishwarya and Mr. Jhazev, who are engaged closely with the festival since the anticipation of it. They have been associated very deeply with this event and also been looking after the pertinent matters of this event. Jhazev is an advocate and also a social activist. Aishwarya is a great artist, and I invite them to speak a few words regarding KLF. Good evening, everyone. First of all, I would like to thank all of you for coming on a short notice. This is the second edition of Kashmir Literature Festival, which is going to happen on 11th and 12th of October at SKICC Srinagar. जो कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल है इसका पहला एडिशन, इसकी शुरुआत हमने इनॉग्रल एडिशन लास्ट ईयर दिसंबर में, हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कश्मीर में एक लिटरेचर फेस्टिवल स्टार्ट करना। जो आप सबको पता होगा कश्मीर में लिटरेचर एक रिच हेरिटेज रहा है। कश्मीर सूफीज़म, एक लिटरेचर और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री रही है कश्मीर की, एक बहुत रिच हिस्ट्री। उसी कश्मीर की इंटेलेक्चुअल रिच हिस्ट्री को, यहाँ के लिटरेचर को हम रिवाइव करने की एक कोशिश हमने इस साल फिर से स्टार्ट की है। हमारा सेकेंड एडिशन इंशाल्लाह 11th and 12th अक्टूबर को SKICC में हो रहा है, इन विच देयर आर एमिनेंट ऑथर्स, स्कॉलर्स, intellectual personalities from across the country who are going to take part in this festival, and therefore we invite everyone to be part of this event. And here many students from various institutions are going to take part in it, and they are going to have a dialogue with various intellectuals. We have our favorite speakers out there, like we have former Vice Chancellor Kashmir University Khurshid Andrabi Saab, we have JK Bank MD Amitabh Chatterjee ji, we have noted Kashmiri writers like Nirja Matuji, who is part of our Kashmir literature speaker panel. We have our chief guest Honorable LG Saab is going to open the festival on 11th October at 10 a.m. एंड हम कश्मीर के लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल एक कश्मीर का इवेंट है, कश्मीर के लोगों का इवेंट है। आई वॉज पार्ट, लेट मी टेल यू माई स्टोरी, how I became part of Kashmir Literature Festival. Last year, someone sent me the invite of Kashmir Literature Festival to come as an audience. So I just contacted the organizers to be part of it, as I wanted to volunteer in such a big event. It was for the first time the Kashmir Literature Festival was happening. So I am a social activist and advocate myself. I have been in public life and meeting people and working for Kashmir. So I wanted to let my voice be heard. But in Kashmir, हम सब जानते हैं कश्मीर के नौजवानों को जब तक कोई पुश नहीं होगा तब तक आपकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। लेकिन कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल वो एक ऐसा इनिशिएटिव था, जब मैंने यहाँ से अप्रोच किया इनको, they made me part of it. There were so many big intellectual personalities of there, but एक नौजवान को इनने पार्ट बनने का मौका दिया और टाइम चलता गया। कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का पहला एडिशन हुआ। आई वाज द यंगेस्ट स्पीकर एट लास्ट एडिशन. Now today I am part of the organizing committee this year, and I want Kashmiri youngsters to be part of Kashmir Literature Festival. हम चाहते हैं कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल को आगे ले जाए। इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं कश्मीर has a negative, people have negative thinking regarding Kashmir, and
हमारी सिर्फ इतनी सी कोशिश है, अगर कश्मीर को कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल से कश्मीर के लिटरेचर के थ्रू जाना जाए, इट्स मच बेटर। कश्मीर का एक रिच हेरिटेज रहा है, यहाँ का एक कल्चर रहा है, उस कल्चर को हम रिवाइव करना चाहते हैं, वही हमारी कोशिश है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आपके थ्रू मीडियम, आपके मीडियम से, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, सो आपके मीडियम से हम कश्मीर के लोगों को बोलना चाहिए, आइए कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का पार्ट बनिए, कश्मीर की आवाज को फिर से आगे बढ़ाइए। हम कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल एक जरिया बनना चाहते हैं, कश्मीर की आवाज को दुनिया तक पहुंचाए। कश्मीर के यंग ऑथर्स आर बीइंग पार्ट ऑफ इट, there are so many youngsters who are going to be part of it, they are going to volunteer for the festival, and we welcome you all to be part of this great initiative which is led by Shrikula Foundation. Thank you. Thank you, Jhanzib. Ms. Ashwarya would like to speak few words regarding silence. सबसे पहले तो मैं नमस्ते सभी को, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबका यहाँ पे आने के लिए। तो एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं किसी से शुरू करूँगी, मैं बताना चाहूँगी कि 5 मिनट की भी अगर हमें परफॉर्मेंस करनी होती है, मुझे स्टेज पे परफॉर्म करना होता है, तो हम घंटों तक प्रैक्टिस करते हैं और बहुत चीज़ों में हमें मेहनत करनी पड़ती है। हमारी कोरियोग्राफी से लेके, कॉस्ट्यूम से लेके, मेकअप से लेके